Hello students, welcome back to Excel Learning. My name is Abhishek Shaw and this is your English classroom where we post English chapters explanation videos. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दी कि आज मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट 3-4 दिन से मुझे बुखार है, खांसी भी है, तो मैं ठीक से बात नहीं कर पा रहा हूँ। और अभी और एक वीडियो मैंने शूट किया तो थोड़ा गले में मतलब थ्रोट पेन भी हो रहा है। सो फिर भी ठीक है, चलो। तो अभी मैं जो वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ ये है क्लास 8 का एक चैप्टर आफ्टर 20 years written by O. Henry. Hello students, my name is Abhishek Shaw and this is your English classroom Excel Learning where we post English chapters explanation video. Today I will go bit slow because I have been suffering from fever, cough, okay, and chest pain since last 4-5 days, and just now I have shot a video, so my throat is paining already. So sorry. So कोई बात नहीं. Today I have brought a chapter for class 8 students and the name of the chapter is After 20 Years written by O. Henry. Please take a pencil and highlight if you have, so that you can mark down few keywords and few points that I am going to tell you in this video. So let's move into the chapter directly because the chapter is bit lengthy and I will go bit slowly, so it's irony, okay, it's contrast. So chalo chapter start karte hain. The policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was habitual and not for show, for spectators were few. The time was barely 10 o'clock. Please mark it, the time was barely 10 o'clock at night, but because of the chilly gusts of wind with a taste of rain in them, there were few people there were few people on the street. So the first stanza introduces us with a policeman, and the policeman was walking, pacing up and down in the street, and he was having a great attitude and with a great impressiveness. Okay, so वो जो impressiveness है वो habitual है, यानी कि दिखावे के लिए वो नहीं कर रहा है. और it was around 10 o'clock at night, so the street was empty, but few people were there on the street. Why? Because of the chilly gust of the wind and the taste of rain in them. यानी कि एक ठंडा हवा चल रहा था, ठीक है, उसमें थोड़ा रेन के फीलिंग्स भी था, इफेक्ट भी था. So only few people were there on the street and the policeman was pacing up and down very impressively. The officer was an impressive guardian of the peace. That means उस officer को देख के very grave, very serious, okay, and the god of peace. He walked down the street, twirling his club, checking that doors are securely locked and keeping a watchful eye over the area. यानी कि वो जो पुलिसमैन था, ठीक है, वो हर जगह जा रहा था, अपना क्लब यानी स्टिक जो है घुमा रहा था और हर एक दरवाजे में नॉक करके देख रहा था that all the doors are securely closed or not. The vicinity was one that keep early hours. Now and then you might see the lights of chemist or of an all-night lunch counter, but the majority of the doors belonged to business places that had long since been closed. So only few shops were opened, like few drug shops, chemist shops, दवाई का दुकान, मेडिसिन शॉप्स, ओके, एंड फ्यू ऑल नाइट लंच काउंटर, जिसे धाबा कहते हैं, ठीक है. अदरवाइज जितना सारा बिजनेस प्लेसेस था वो सब बंद हो चुका था ऑलरेडी. क्यों बंद हो चुका था? बिकॉज ऑफ चिल्ड वेदर. सॉरी. When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. In a doorway of a darkened hardware store stood a man leaning against the wall. So वो जब एक पर्टिकुलर ब्लॉक से जा रहा था, अचानक देखा कि एक आदमी वहाँ पे खड़ा है, तो उसे देख के वो जो पुलिसमैन, उसका जो ट्रीड है, उसका जो मतलब स्टेप्स है, वो स्लो हो गया, ठीक है. द पुलिसमैन शोन हिज टॉर्च इन द डायरेक्शन ऑफ द मैन. लाइट दिखाया ऐसे. हिंदी फिल्म आप लोग देखते हो ना, तो जैसे होता है बिल्कुल वही चल रहा है यहाँ पे. सॉरी गाइस. The light showed a pale, square-jawed face with keen eyes and a little white scar near his right eyebrow. ये पूरा मार्क करो कि as soon as the policeman shone the light to the direction where the man was standing, okay, the light fell on the face of the man. And how it was a pale face, square jaws, square kind of face था, okay, with keen eyes and a little white scar near the right eyebrow. यहाँ पे एक कटा हुआ
थोड़ा दाग था। हिज स्कर्फ पिन वॉज लार्ज डायमंड ऑडली सेट, स्कर्फ था, स्कर्फ में एक डायमंड था, ऑडली सेट था यानी कि ठीक तरह से सेट नहीं था। ओके, एज द पुलिसमैन वॉक्ड अप टू हिम द मैन spoke up quickly. So seeing the man, as when the policeman just reached near the man, then and there the man who was standing over there started speaking. So यहाँ पे और एक जो बात है, जो मैन वहाँ पे खड़ा था, जो आदमी वहाँ पे खड़ा था, उसका स्कर्ट में एक डायमंड भी था, ठीक है। सो इट शोज हिज लग्जरियस लाइफ, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर मैन was standing there outside the shop, okay, he leads a luxurious life. It's all right, officer, he said reassuringly. I'm just waiting for a friend. It's an appointment made 20 years ago, Sergil. So the man thought that the policeman might do something with him. और ये भी एक बात है, उस मैन को, उस आदमी को क्यों लगा कि वो पुलिसमैन उससे कुछ करेगा, है कि नहीं? वो तो बस खड़ा था वहाँ पे। इट्स ओके सर, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, बट एक्चुअली आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। it is an appointment that was made 20 years ago. 20 साल पहले एक अपॉइंटमेंट था, वो उसी के लिए आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। Sounds a little funny to you, does not it? Well, I will explain if you'd like to make certain it's all straight. About that long ago, there used to be a restaurant where this store stands, Big Joe Brady's restaurant. Please mark. तो अब वो बोल रहा है कि अगर आप मुझे एश्योर कर सकते हो कि आप कुछ नहीं करोगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो जिस प्रॉमिस के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो प्रॉमिस क्या था। आप ये दुकान देख रहे हो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे आज से कुछ साल पहले, ठीक है, बहुत साल पहले, आज यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। क्या नाम था रेस्टोरेंट का? बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट। अब पुलिसमैन बोल रहा है, until 5 years ago, said the policeman, it was torn down then. Yeah, right. Only just 5 years ago the restaurant was there. फिर तो उसे तोड़ दिया गया। 20 years ago tonight, said the man, I dined here at Big Joe Brady's with Jimmy Wells. यानी कि आज ही के दिन, आज से 20 साल पहले आज ही के दिन मैंने यही रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड जिमी वेल्स के साथ लास्ट टाइम डिनर किया था। My best pal, that means my best friend, the best chap, okay, and the finest chap in the world. He and I were raised here in New York, just like two brothers together. You know, जिमी और मैं, हम लोग यही न्यूयॉर्क में बड़े हुए हैं, एक भाई की तरह। हालांकि हम लोग दोस्त हैं, लेकिन हम लोग एक अपना भाई की तरह हम लोग न्यूयॉर्क में एक साथ बड़े हुए हैं। I was 18 and Jimmy was 20. That means the speaker who was waiting there, he was 18 years old at that time, 20 years ago, and Jimmy was 20 years old. Okay. The next morning I was to start for the West to make my fortune. You could not have dragged Jimmy out of New York. He thought it was the only place on the earth. So, sorry. तो क्या बोल रहे हैं कि आज ही के दिन 20 साल पहले हम लोगों ने यहाँ पे डिनर किया था, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड जिमी के साथ, ठीक है। उसके नेक्स्ट दिन ही मैं वेस्ट में चला गया। वाई? टू मेक माई फॉर्च्यून, दैट मीन्स टू बिल्ड अप माई कैरियर। बट वन कैन नॉट टेक जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, एंड बिकॉज अकॉर्डिंग टू जिमी न्यूयॉर्क इज द ओनली प्लेस इन द अर्थ। तो बोल रहा है मैं तो वेस्ट में चला गया जस्ट टू बिल्ड अप माई कैरियर, जस्ट टू बिल्ड अप माई फॉर्च्यून, जस्ट टू मेक माई फॉर्च्यून। लेकिन जिमी नहीं गया, क्योंकि जिमी को ये लगता था कि न्यूयॉर्क की सिर्फ एक ही जगह है, एंड यू कैन नॉट टेक हिम आउट ऑफ न्यूयॉर्क। Well, we agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from that day, and the time, no matter what our conditions might be or from what distance we might have to come. We figured that in 20 years, each of us ought to have our destiny worked out and our fortunes made, whatever they are going to be. And we promised that night that after 20 years on the same day and on the same date, we will meet here again. Does not matter whatever our situation will be, does not matter how far distance we need to cover, we will come and we will meet here. यानी कि उसी दिन, आज ही के दिन 20 साल पहले जब वो लोग ने वो मतलब जिमी वेल्स और ये जो स्पीकर है, ठीक है, स्पीकर का नाम अभी तक हम लोग को नहीं पता, कि जब डाइन किया था, जब डिनर किया था, तब उन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आज से 20 साल बाद हम लोग यहीं पे इसी टाइम पे मिलेंगे। ये मैटर नहीं करेगा कि हम लोग कितनी दूर से आ रहे हैं और हम लोग का फॉर्च्यून क्या है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ।
अगर हम लोग जिंदा रहेंगे तो आज ही के दिन हम लोग यहीं पे 20 साल बाद मिलेंगे। तो समझ में आया, वो इंसान, वो आदमी वहां पे क्यों वेट कर रहा था? क्योंकि ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड जिमी। ओके, It sounds pretty interesting, said the policeman. Rather a long time between meets, though, it seems to me. Haven't you heard from your friend since you left? तो बोले वाह नाइस, इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप लोगों ने जब लास्ट डिनर की तो उसके बाद क्या आपने आपसे बात नहीं हुआ आपके दोस्त का? कुछ बात वगैरह नहीं हुआ है? वेल यस फॉर ए Well, yes, for a time we corresponded, said the other. But after a year or two, we lost track of each other. You see, the West is a pretty big place, and I kept hustling. हाँ, कुछ साल बात हुआ था, लेकिन फिर कनेक्शन टूट गया, नहीं हुआ बात। वेस्ट कितना बड़ा जगह। I kept on hustling, यानी कि I was extremely busy in building up my career, in building up my fortune. Around over it pretty lively, but I know Jimmy will meet me here if he is alive. That means the man who was standing over there, he was extremely confident. He he had complete faith on his friend. He is telling very assuringly that I know if Jimmy is alive, he would come and meet me here itself. Okay, for he always was the truest, stanchest old chap in the world. Truest, stanchest mark कर लो, कीवर्ड यूज करना अपने आंसर स्क्रिप्ट पे. He will never forget. I came 1,000 miles to stand in this door tonight, and it's worth it if my old partner turns up. तो बोला इसीलिए मैं बहुत दूर से आज आया हूँ यहाँ पे, 1,000 माइल दूर से मैं आया हूँ, ये भी मार्क कर लो, मेरे दोस्त से मिलने. तो अगर वो जिंदा है, if he is alive, he would come surely because he was the truest and stanchest chap. The waiting man pulled out a handsome watch, very important, mark karna, the lead of which were set with small diamonds. So the man was standing over there, then he took out a small watch, and at the lead of the watch, ढक्कन जो है वहां पे भी डायमंड सेट हुआ था. तो उसका स्कार्फ में डायमंड है, घड़ी में डायमंड है. दैट मीन्स डेफिनेटली ही मस्ट बी अ वेल्दी पर्सन. ओके, 3 minutes to 10 ये क्वेश्चन आता है. ओके, 3 minutes to 10 यानी कि 10 बजने में 3 मिनट बाकी है. He announced it was exactly 10 o'clock when we parted here the restaurant door. यानी कि 10 बजने में अब सिर्फ 3 मिनट बाकी है, और आज से 20 साल पहले आज ही के दिन it was exactly 10 o'clock when we parted away from here. हम लोग यहाँ से जब अलग हुए थे, ठीक है, तो it was 10 o'clock at night. So the man had the belief that Jimmy would come by 10 p.m. Did pretty well out in the West, did not you? asked the policeman. ये तो पुलिसमैन तो देख रहा है ना कि उसके स्कार्फ में एक डायमंड है, उसके घड़ी के लीड में डायमंड है, तो बोल रहा है कि अच्छा, वेस्ट में आपने बहुत अच्छा पैसा कमाया है कि नहीं? You bet. I hope Jimmy has done half as well. He was a kind of plodder, though good fellow as he was. I have had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile. A man gets in a groove. Just a second. A man gets in a groove in New York. It takes the West to put a razor edge on him. The policeman twirled his club and took a step or two. So वो बात करते करते ये सब हुआ, बात कर रहा था, फिर पुलिसमैन और एक बार अपना मतलब वो जो स्टिक है, जो डंडा है, वो घुमाया, 2-3 स्टेप लिया. I will be on my way. Hope your friend comes around all night. Going to call time on him sharp. तो अब बोल रहा ठीक है, fine. Then I'm moving. I have my duty to perform. So I hope that your friend will come definitely. Okay, best of luck. बोल के वो चला गया. I should stay. I should say not, said the other. I will give him half an hour at least. If Jimmy is alive on the earth, he will be here by that time. So long, officer. So see the confident level of the man. He is telling that I will give half an hour because I don't know where Jimmy lives right now, where Jimmy dwells right now, where Jimmy resides right now. Okay, ऐसे भी हो सकते कि बहुत दूर से आ रहा है, so he might be late. But I will give him half an hour. But if he is alive, he will be here by that time. वो यहाँ पे रहेगा. Good night, sir, said the policeman, passing on along his beat, trying
doors as he went. तो अब सेम दरवाजे पे नॉक करते करते पुलिस वहाँ से चला गया. आई होप इतना तक पूरा जो सिनारियो है वो क्लियर है. There was now a fine cold drizzle falling and the wind had risen from its uncertain puffs into a steady blow. The few pedestrians astir in that quarter hurried dismally and silently along with coat collars turned high and pocketed hands. And in the door of the hardware store, the man who had come 1,000 miles to fill an appointment, uncertain, almost absurdity, with the friend of his youth, was the street and waited. अब उस टाइम क्या हुआ, थोड़ा कोल्ड ड्रिजिंग होने वाला हो रहा था. ठीक है, सारा जो इंसान है, मतलब जितना सारा फ्यू पीपल वेर देयर ऑन द स्ट्रीट, सो दे उन्होंने अपना कॉलर, जैकेट का कॉलर एकदम ऊपर तक कर लिया और पॉकेट में हाथ डाल के वो सब जा रहे हैं. बट द मैन वॉज वेटिंग स्टिल ओवर देयर for his friend. About 20 minutes he waited. Then a tall man in a long overcoat with collar turned up to his ears hurried across from the opposite side of the street. He went directly to the waiting man. That means it was 10 बजाता था. ठीक है, तो अभी 10:20 हो रहा है. तो रोड के ऑपोजिट साइड से एक लंबा, एक अमिताभ बच्चन जैसा एक लंबा आदमी सीधा उस आदमी के पास आया. Is that you, Bob? He asked doubtfully. That means the man who was waiting over there, his name was Bob, okay, and his friend's name was Jimmy, that we already got. Is that you, Bob? तुम Bob हो ना? Is that you, Jimmy Wells? Cried the man in the door. My God, Jimmy, you have come. He could not believe it. You are extremely happy that his friend has come. Bless my heart, exclaimed the new arrival, grasping bless my heart. इसे सर्कल करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरनी है, मैं बता रहा हूं. Exclaimed the new arrival, grasping both the other's hands with his own. It's Bob, sure as fate. I was certain I would find you here if you were still in existence. Well, 20 years is a long time. The old restaurant is gone, Bob. I wish it had lasted so we could have at another dinner, dear. How has the West treated you, old man? So now Jimmy is talking to Bob. Oh my God, I could not believe my eyes. It is you. 20 years have passed and still you are waiting for me here. I cannot believe my eyes and I wish कि वो रेस्टोरेंट अभी भी रहता. तो 20 साल पहले हम लोगों ने जो डिनर किया था, आज भी हम लोग फिर से डिनर करते वहाँ पे. ओके, काश वो रेस्टोरेंट यहाँ पे रहता. सो दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी टू मीट ईच अदर. बुली तो बोला कि वेस्ट में तुम कैसे काम कर रहे हो, बोलो कैसे वेस्ट तुम्हें ट्रीट कर रहा है. बुली, इट हैज गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड इट फॉर. यू हैव चेंज्ड लॉट्स, जिमी. आई हैव नेवर थॉट यू आर सो टॉल बाय 2 or 3 इंचेस. यानी कि देखो ऑब्जर्वेशन पावर देखो बॉब का. वो बोला माय गॉड, ठीक है चलो, मैंने तो वेस्ट से जो भी मांगा वो मुझे दिया, लेकिन तुम इतना लंबे हो जाओगे 2-3 इंच, ये तो मुझे मतलब आई एम वेरी सरप्राइज्ड. ओके, सो बॉब वाज कीन ऑब्जर्वर. ओह, आई ग्रू अ बिट आफ्टर आई वाज 20. अच्छा, हाँ 20 साल में हो गया था तो उसके बाद भी मैं थोड़ा लंबा हो गया. चलो ठीक है. डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क, जिमी. तो बोला है तो हाउ आर यू वर्किंग इन न्यूयॉर्क? Moderately, I have a position in one of the city departments. City departments means police. Okay, fine. I am in police in New York police. Okay. Come on, Bob. We will go around to a place I know of and have a good long talk about old times. तो बोला ठीक है चलो हम लोग चलते हैं, पैदल चलते हम लोग, मुझे एक जगह पता है वहाँ पे, चलो हम लोग जाएंगे, एंजॉय करेंगे, चलते बात भी करेंगे. The 2 men started up the street. So both of them, Bob and Jimmy Wells, started walking. Okay, arm in arm, ekdam. The man from the west. That means who is the man from the west? Bob. Okay. His egotism, enlarged by success, was beginning to outline the history of his career. The other, submerged in his overcoat, listened with interest. So Bob was telling how he spent his life after leaving New York. Okay, he was very proud of describing his past, and Jimmy was listening to him with rapt attention, just hiding himself under the coat. At the corner stood a drugstore. Drugstore means medicine shop. Okay, brilliant with electric lights. When they come into his glare, each of them turned simultaneously to gaze upon the
other's face. So they were working, they were working, a medicine shop was there, it was brightly lit. Okay, so वहाँ पे जब आया दोनों, मतलब ऐसे दोनों जा रहा था, दोनों they just faced each other just to see their faces. The man from the west, कौन है man from the west? Bob. Stopped suddenly and realized and released his arms. So as soon as Bob looked at her, looked at his face, okay, he released his arms. छोड़ दिया हाथ. He was stunned. He was surprised. You are not Jimmy Wells, he snapped. 20 years is a long time, but not long enough to change a man's nose from a romance to a pug. But you, no, you are not Jimmy Wells. Why? Because you had a nose like romance. ओके 20 ईयर्स बहुत लंबा टाइम है, ये मुझे पता है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं है कि एक इंसान का जो नाक है वो मतलब शार्प नाक से वो पग के जैसा नाक हो जाएगा. पग जो डॉग है देखियो ना आप लोग, उसका नाक कैसा है, ठीक है, दबा हुआ नाक है. तो सॉरी, तो वही बोल रहा है कि यू हैड अ शार्प नोज एंड 20 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम, बट इट इज नॉट दैट मच लॉन्ग टू टर्न अ मैन्स नोज from a sharp nose to a nose like pug. It sometimes changes a good man into bad one. अब उसी रेफरेंस को लेके जिमी वेल्स बोल रहा है but 20 years is enough time to turn a good man to a bad man. एक अच्छे इंसान को बुरा इंसान बनाने के लिए बहुत मतलब इनफ टाइम है 20 years. Said the tall man. You have been under arrest for 10 minutes. Silky Bob. ओके, दिस सिल्की जो है वहाँ पे कोटेशन में है, सिल्की बॉब. द पुलिस डिपार्टमेंट एट शिकागो दैट इज इन्वेस्टिगेटिंग यू टिप्ड अस ऑफ दैट यू वुड बी हियर एंड आस्क्ड अस टू अरेस्ट यू. यानी कि द डिपार्टमेंट ऑफ शिकागो, ओके, दे ऑर्डर्ड अस टू अरेस्ट यू. गोइंग क्वाइट आर यू? That's sensible. Now, before we go on to the station, here's a note I was asked to hand you. You may read it here at the window. It's from Patrolman Wells. So, अब बोला ठीक, अब चुपचाप सीधा यहाँ से मेरे साथ आप पुलिस स्टेशन चलो. ओके, लेकिन जाने से पहले ये एक उसके हाथ में जो जिमी वेल्स जो है, ठीक है, मतलब जो पुलिसमैन था, ठीक है, वो उसके हाथ में एक कागज़ दिया और बोला कि ये पहले पढ़ लो. जो पेट्रोलमैन था, पेट्रोलमैन मतलब जो पहले जो पुलिस into matlab earlier in this particular story we got that policeman who was pacing up and down on the street impressively. तो वो जिमी वेल्स, पेट्रोलमैन कौन था? जिमी वेल्स था. तो एक्चुअली जिमी वेल्स थे, उन्होंने तुम्हें ये कागज दिया, पहले ये पढ़ लो. द मैन फ्रॉम द वेस्ट, कौन है मैन फ्रॉम द वेस्ट? बॉब. ओके, अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ पेपर. हिज हैंड वॉज स्टेडी व्हेन ही बिगैन टू रीड, बट इट trembled a little by the time he had finished. The note was rather short. तो बोला कि जब वो कागज़ लेके जब खोल के वो पढ़ रहा था तब उसका हाथ स्टेडी था, लेकिन जब वो फिनिश किया उसका हाथ ऐसे कांप गया. तो नोट में क्या लिखा था देखो. बॉब, आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम व्हेन आई सॉ योर फेस इन द टॉर्च लाइट. आई सॉ इट वॉज द फेस ऑफ द मैन वांटेड इन शिकागो. समवन आई कुड नॉट डू इट माई सेल्फ. Somehow I could not do it myself, so I went around and got a plain clothes man to do the job. Jimmy. यानी कि जो पेट्रोलमैन जिससे बात कर रहा था बॉब, ठीक है, वो पुलिसमैन, वही एक्चुअली उसका दोस्त था. कौन था? वो था जिमी वेल्स. और जब जिमी वेल्स टॉर्च का लाइट जब उसके मतलब फेस देखा बॉब का, तभी जिमी वेल्स समझ गया कि ये मेरा दोस्त है, लेकिन उससे ज़्यादा पहले मेरा काम है. First duty, then friendship. And he declared that I could not arrest you with my hands. Why? Because I truly love you. You are my good friend. So I just went around and I sent a plain clothed man to arrest you. तो यहीं पे जो है स्टोरी ख़त्म हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी. आई होप यू गॉट द पॉइंट. एक जगह जो था मैंने मार्क करने के लिए आप लोगों को कहा था कि ब्लेस्ड माई हर्ट, ब्लेस माई हर्ट, ये दो तरह से हम लोग ले सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ हम लोग अगर ऐसे देख ले कि वो जो बाद में जो इंसान बाद में जो आदमी आया उसके तो अगर वो जिमी वेल्स ही है तो वो इस सेंस से बोल रहा है कि ब्लेस माई हार्ट दैट यू आर स्टिल अलाइव एंड यू हैव कम टू मीट मी. आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड आई एम एक्सट्रीमली ब्लेस्ड. ये एक फॉर्म हो सकता है. और एक ये हो सकता है कि ब्लेस माई हार्ट यू आर जिमी, सॉरी यू आर सिल्की बॉब.
सिटी डिपार्टमेंट तुम्हें ही ढूंढ रहा है, तो फाइनली तुम मिल ही गए, ब्लेस माई हार्ट। ओके, सो ये जो बात है, ये डायलॉग हम लोग ऐसे देख सकते हैं दो मीनिंग के हिसाब से। तो फाइनली तो वो जो पेट्रोलमैन था वही सिल्की बॉब का दोस्त था जिमी वेल्स, जिसके लिए बॉब वहां पे वेट कर रहा था। सो सी द थीम ऑफ द स्टोरी इज गुड फ्रेंडशिप। बोथ ऑफ देम आर गुड फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर, दैट इज द रीजन बॉब was waiting there for his friend, एंड जिमी वेल्स को भी याद है, और जिमी वेल्स का भी फ्रेंडशिप इतना ही गहरा है कि ही वॉज फीलिंग वेरी गिल्टी, ही वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली बैड टू अरेस्ट हिज फ्रेंड विथ हिज hands only. That is the reason he went around and he sent a plain clothed man to arrest him. और एक बात है कि ड्यूटी फर्स्ट, दिस इज अनदर थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी, ड्यूटी फर्स्ट, राइट। दैट इज द रीजन जिमी वेल्स जो है वो भावना में बह नहीं गया कि मेरा फ्रेंड है, मैं इसे कैसे अरेस्ट करूं, ये हो नहीं सकता, बचपन से हम लोग दोस्त हैं। जिमी वेल्स के लिए उसका ड्यूटी ही फर्स्ट है। So here I hope you all have enjoyed this story. Read out this story once again line by line. If any problem is there, you can write to me, you can ask me, and I will take a time to reply you all. That is my promise. Okay, and if you want to contact, my phone number has been given in the description box. Please check it out, and that's all. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए goodbye and God bless you all.